Hello children. So we have started chapter number 13 air in our previous class. So let us continue with the same chapter and let us quickly recap what we have learnt. We have just came to know what is air and what are the properties of air. Now the next topic is wind. So kindly open your books at page number 99 children and see the topic of wind. Moving air is called wind. So what is wind? Wind is nothing but moving air. मतलब wind is nothing but the moving air. The sun warms the earth's surface. Yes, we know that the surface of the earth gets heated up by the sun. Sun की heat की वजह से earth की surface heat होता है. And then the air above the earth's surface, earth gets warm and starts moving. So then what happens? We know that air is present everywhere on the earth, and so whatever the air that is present on the earth gets warm, वो भी थोड़ा हल्का गर्म हो जाता है. And what it does, it just starts moving. The air just starts move करना start कर लेते हैं. The movement of air makes the wind blow. So this particular movement of air is nothing but wind. Movement of air. एयर जब मूव करते हुए चलता है तो दैट इज नथिंग बट विंड. व्हेन द विंड ब्लोस जेंटली, व्हाट डू यू मीन बाय जेंटली? जेंटली मीन्स बहुत आराम से, very smoothly and slowly. When the wind blows gently, it is called a breeze. Then what we will call it as breeze. So the wind blows in different types. Sometimes it just blows gently, बहुत आराम से, softly and smoothly. Then this particular movement of air, wind, is called breeze. What we will call children? Breeze. When the wind blows strongly, but sometimes the movement of air is very strong and fast. Then when the wind blows strongly, when the wind blows very strong, it is called a storm. storm. इसको क्या बोलते हैं हम? Storm. When the wind blows strongly, बहुत strongly जब wind blow होता है, then we will call it as a storm. Storm means आंधी. आंधी आंधी आता है ना, जैसे तूफान की टाइम पे कई बार हम डस्ट की भी आंधी देख सकते हैं. सो इसी को हम स्टॉर्म बोलते हैं. एट द टाइम वी कैन सी हाउ फास्टली द विंड ब्लोस. अपनी घर की डोर्स, विंडो पेन सब कटा देती है आंधी इतना फास्टली, है ना. इवन द ट्रीज फ्लू जस्ट लाइक, मतलब इतना फास्टली करते हैं, बहुत सारे ट्रीज उस टाइम पे गिर भी जाते हैं. मीन्स दे मे फेल डाउन ऑल्सो. दैट इज व्हाट इज स्टॉर्म इज. बट व्हेन इट ब्लोस वेरी स्मूथली एंड सॉफ्टली, इट इज कॉल्ड एज ब्रीज. बट व्हेन द विंड ब्लोस वेरी स्ट्रांगली, इट इज कॉल्ड एज अ स्टॉर्म. Now turn your pages children. Sorry, turn your page. The next, we are continuing with the same topic. And a breeze is pleasing. How will you feel when a breeze blows? मतलब कभी भी जब breeze blow होता है, मतलब हल्का wind जब चलता है, how do you feel? You just feel very pleasing. बहुत enjoy करने जैसा, बहुत आरामदायक लगता है. But a storm is harmful. But the strong wind which comes in the form of a storm, it is very harmful. वो बहुत harmful होता है. A storm can uproot trees. Yes, what a storm can do? A storm can uproot. Uproot means पूरा ground से उनकी roots पूरा उखाड़ सकते हैं. Uproot means to pull up. पूरा जैसा ट्रीज के कितने बड़े बड़े रूट्स होते हैं, ये रूट्स को भी अपरूट करना, मतलब वो रूट्स को भी उखाड़ देते हैं. पूरा जमीन से रूट्स के साथ ट्री उठ के भी गिर सकते हैं. इतना पावरफुली वो विंड ब्लो होता है उस टाइम. एंड डैमेज प्लांट्स. यस, डैमेज करना मतलब इन ऑर्डर टू हर्ट, हार्म करना. सो दे कैन डैमेज द प्लांट्स ऑल्सो. बहुत तरह के क्रॉप्स को, प्लांट्स को भी डैमेज कर सकते हैं. कई सारा प्लांट्स में फ्रूट्स लगे हुए रहते हैं, तो इस स्टॉर्म की वजह से वो फ्रूट्स की फ्रूट स्टेज से पहले ही वो गिरने की चांसेस है. एंड सो मेनी इट ओके नेक्स्ट, इट ब्लो नेस्ट अवे. सो व्हाट इट डूज, इट इवन ब्लोस द नेस्ट अवे, मतलब नेस्ट को भी उड़ा देती है. वी कैन सी दैट इन द पिक्चर 13.2. A storm can uproot trees and damage houses. देखिए कैसा स्टॉर्म, कितना जोर जोर से विंड आता है उस टाइम में, आंधी की टाइम पे, तो ट्रीज पूरा अपरूट होके नीचे गिरने की चांसेस है. इवन द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स में ब्लो
एंड इट में बैंग डोर्स एंड विंडोज, कटा देते हैं ना दरवाजे और विंडोज को अपनी घर की। ब्रेक विंडो पेन्स, यस अपन विंडो की पीछे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखते हैं या विंडो पेन्स जो भी आप प्लेस करते हो वो भी ब्रेक हो जाते हैं। एंड ब्लो ऑफ द रोड्स रूफ्स ऑफ हट्स, एंड ब्लो ऑफ मतलब पूरा उठा देते हैं किसको, द रूफ्स ऑफ हट्स। हट्स मतलब वो पक्का हाउसेस नहीं होते हैं, दे आर कच्चा हाउसेस, एंड उनके ऊपर की छत भी पूरा उड़ जाए, इतना हार्मफुल है। स्टॉर्म इज वेरी हार्मफुल। इट में अप्रूट द ट्रीज को अप्रूट कर सकते हैं, डैमेज द प्लांट्स, ब्लो नेस्ट अवे, बर्ड्स की बिकॉज द होम ऑफ बर्ड्स इज नथिंग बट ट्रीज, बट बिकॉज ऑफ स्टॉर्म दीज नेस्ट्स ऑल्सो ब्लोस अवे। बैंक डोर्स एंड विंडोज, घर की डोर्स और विंडोज भी बैंक हो जाते हैं। ब्रेक विंडो पेन्स या ग्लास शटर्स जो भी है आपके घर पे वो भी जाने की चांसेस है। एंड ब्लो ऑफ द रूट्स ऑफ द हट्स, छोटी छोटी हट्स की पूरा रूफ भी उड़ सकता है। So this is the difference between what is a storm and what is a breeze. Now the next topic is uses of air. What are the main uses of air? We breathe air. What we breathe? Yes, we know that we always breathe air. All living things need air. Yes, we know all living things, may it be humans, plants, animals, all living things need air to live. Air is filled into tires of vehicles. Yes, isn't it? I hope everybody could have a cycle at your home, and what is the tire of your cycle is filled with? Air. Children learn to swim using rubber tubes filled with air. Yes, so many times when you go to a resort or a swimming pool or somewhere, what you used to do while swimming for the first time, what they used to do, they used to give us some rubber tubes filled with air, and you just be there so that you cannot be drowned. आप drown होने के बिना वो आपको बचाते हैं. So the rubber tubes that they have provided to you are filled with air. एयर हेल्प्स इन बर्निंग. यस, कोई भी चीज़ को अगर जलना है, बर्न होना है, जैसे अपन कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, स्टोव जला के खाना बनाते हैं, तो कोई भी थिंग को अगर बर्न होते हुए रहना हो तो वी डेफिनेटली नीड एयर. विदाउट एयर वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग. एयर हेल्प इन बर्निंग. विंड हेल्प्स टू ड्राई आवर क्लॉथ्स एंड फ्लाई kites, isn't it? Especially now in winter season, what we used to wear woolen clothes. After washing those clothes, it is very necessary to dry them out. So how our clothes become dry? We used to hang them at some place so that the wind that is blowing can dry them, and even the heat of the sun. And the air is used to fly kites. Yes, we are waiting for the festival of Shankranti, which is the festival of kites also. On the day, what you used to do, you can fly kites. Even in some places kite festival also takes place, which the people used to enjoy a lot. It also forces gliders and hot air balloons to move. Yes, if you could have saw the gliders, आपने gliders देखा होगा कभी पिक्चर वगैरह में या टीवी में gliders देखते हो, तो ये gliders भी कैसा मूव करते हैं. ये ग्लाइडर्स हुआ, हॉट एयर बैलून्स, पैराशूट बैलून्स, बड़े बड़े जो बैलून्स नहीं होते हैं उन सब में भी एयर ही फिल करते हैं. इन द सेम वे ग्लाइडर्स को, हॉट एयर बैलून्स को मूव कराने के लिए एयर हेल्प्स अ लॉट. बिग एरोप्लेन्स ये सब भी कैसा उड़ते हैं, हवा में उड़ने वाली चीज़ें, सबके लिए एयर की ज़रूरत है. सेल अ बोट, बोट को सेल करने के लिए, इफ़ वी वांट टू सेल अ बोट, इट नीड्स एयर टू मूव फॉरवर्ड. एंड रन विंड मिल्स भी आपने कभी ट्रैवलिंग की टाइम पे देखे होंगे. तो विंड मिल्स, व्हाट आर विंड मिल्स? एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़ में जहाँ पे ट्रीज वगैरह हो, जहाँ बहुत अच्छी हवा आती होगी, उधर बहुत विंड मिल्स कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं. विंड मिल्स में आप रोटेटिंग व्हील्स देख सकते हो, जैसा फैन की व्हील्स जैसा व्हील्स होते हैं उनकी साइड की, जब विंड ब्लो होता है उससे वो रोटेट होते हैं, बहुत फास्टली रोटेट होते हैं. रोटेट होंगे, उनके नीचे एक जनरेटर रखते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. मतलब नेचुरल सोर्स, विंड कहाँ से खरीद के तो नहीं ला रहे हम, विंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. हो या नेचुरल रिसोर्स यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो वी कैन इवन sail a boat and run windmills too using this air.